हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, भाई बहनों, व्हाट्सअप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे भगवान, यार एक्चुअली पावर ही नहीं है। मुझे नहीं पता अब कितनी देर क्लास चलेगी। फैन भी ऑन नहीं हो रहा है यार। एक मिनट देना, कुछ तो मैं गर्मी में मर जाऊंगा। यस, चलो भाई। लो यार, तो ये अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज में कल हम लोगों ने पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना, जून 25 का। आज पार्ट बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं एक बार जल्दी से। पहला क्वेश्चन, यार मैंने जिस तरीके से आप लोग की अटेंडेंस ड्रॉप हुई ना, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम मंडे। ये एक पेपर सॉल्व करा देता हूँ। अब जब मुझे ऐसा लगेगा थोड़े टाइम बाद कि सब थोड़ा वापस से सिंसियरली आएंगे, उसके बाद मैं वापस से सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, है ना। बीच में अपन लोग ब्रेक ले लेंगे। मैंने साला पहले ही दिन बोला था, बट तुम लोगों का ना बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी का। तो ये पेपर सॉल्व कर लेते, दिसंबर 24 बाद में करेंगे। हाँ जी। क्या करना है मेरे को? ओके, लो भाई क्वेश्चन पढ़ना एक बार जरा साथ में। चल क्वेश्चन देखें। अ कंपनी, ये मैं क्वेश्चन 5 पढ़ रहा हूं, पार्ट 2। अ कंपनी XYZ लिमिटेड इज इन्वॉल्वड इन अ कमर्शियल डिस्प्यूट विथ इट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग एलिज्ड मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो बेसिकली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल किया है किसने? कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अगेंस्ट द कंपनी। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर द NCLT seeking various interim reliefs. So what are they demanding? Interim relief demand कर रहे हैं। The tribunal, after hearing the parties, passed an interlocutory order. तो ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया, विच इज एन इंटरिम रिलीफ restraining the company's board from passing any major financial resolutions without prior approval. So NCLT ने ऑर्डर पास कर दिया कि साहब जब तक कि फाइनल ऑर्डर आता है तब तक कि अगर कोई भी मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो तो उस केस में वो आप बिना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के नहीं कर सकते हो। XYZ लिमिटेड कंटेंट्स दैट द ऑर्डर इज अनजस्ट एंड सीक्स टू चैलेंज इट बिफोर द NCLT। तो XYZ को ऐसा लग रहा है कि साहब वो NCLT के सामने जाना चाहता है बिकॉज इट वांट्स टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ द NCLT। However, the respondents argue that the order is purely interlocutory and not subject to appeal. तो इनका ये कहना है कि साहब जब तक ऑर्डर फाइनल नहीं होता आप उसको चैलेंज कैसे कर रहे हो? तो आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, द ऑर्डर्स यूजुअली आर नॉट अपीलेबल। मीनवाइल XYZ लिमिटेड आल्सो फाइल्स अ रिवीजन पिटीशन। ओ तेरी, अच्छा रिवीजन पिटीशन सबसे पहले ये ध्यान रखना कब फाइल करते हैं? जब भी हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अपने पावर्स एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर लिए या फिर दे फेल टू एक्सरसाइज देयर ज्यूरिसडिक्शन, राइट। दोनों केसेस में आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। बट रिवीजन हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। आपने रिवीजन पिटीशन फाइल किया लेकिन हाई कोर्ट उसको एडमिट करेगा नहीं करेगा, ये चॉइस किसकी होगी? ये चॉइस टिपिकली क्या कहते हैं, हाई कोर्ट की होगी। अंडर इट्स सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑब्टेनिंग क्लेमिंग दैट द NCLT exceeded its jurisdiction। तो बेसिकली उन्होंने एक्सरसाइज की अपने पावर्स एक्सेसिवली। द रिस्पोंडेंट्स counter that the power of revision cannot be exercised in this case since an alternative remedy exists। ये भी इनका कहना सही है। सो आपका कहना है कि रिविजन पॉसिबली कौन से केस में आता है? जहां पर कोई दूसरी आपके पास रेमेडी नहीं हो, जैसे एक अपील की रेमेडी ना हो आपके पास। तो अगर अपील नहीं हो सकती तो उस केस में आप रिविजन ट्राई कर लो, बट रिविजन में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ज्यूरिसडिक्शन का प्रॉब्लम है, राइट। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है
ऐसा नहीं कि ये नॉन अपीलेबल है, सो इन दैट केस रिविजन बनता ही नहीं है. एडिशनली XYZ Limited argues that even if the appeal is not maintainable, the revision should be treated as an appeal in the interest of justice. The respondents dispute this claim citing procedural limitations. तो दूसरी पार्टी का कहना है कि साहब ये तो गड़बड़ है. Furthermore, as the main dispute progresses, the case reaches the trial stage where questions arise regarding the admissibility of certain evidence and the role of the tribunal in assessing disputed facts. तो बस अब वो क्वेश्चन करें ट्रिब्यूनल के पावर्स के बारे में चेक करें. Answer the following questions. Whether the order passed by NCLT qualifies as an interlocutory order and if it is appealable. अच्छा, अगर interlocutory nature है तो definitely not appealable है, because जब तक final order नहीं आता आप उसको challenge ही नहीं कर सकते हो. Second, the extent of powers of revision under relevant laws and whether the High Court can exercise its jurisdiction in this case. High Court को अगर आप ये prove कर सको, establish कर सको to their satisfaction that they have excessively exercised their jurisdiction, they failed to exercise. In that case, High Court के पास revisionary powers. Illustrate the procedural aspects and stages for filing an appeal before NCLT. ठीक है, NCLT 1 वाला अपने को बताना है. ये तो सिंपल क्वेश्चन है थर्ड वाला. ठीक है. और क्या बोल रहे हो? इनकी वजह से हमें क्या? अरे यार, तो मैं क्या, तुमको लगता है मुझे मजा आ रहा है? मैं तो अच्छा है जल्दी जल्दी पढ़ा के मैं फ्री हो जाऊं, आप भी फ्री, मेरा भी काम हो जाए कि भाई तुम लोगों को पढ़ने का टाइम है. पर नॉनसेंस आती ही नहीं यार. अटेंडेंस देखो साला, इट इज डिमीनिंग. हाँ ना, ऐसे छुज्जे चार लोगों को पढ़ाने होंगे कि रोज के रोज रोज के रोज आते ही नहीं है. इतना कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है ना सीएस में, इसीलिए साला रिजल्ट्स खराब आते हैं. इसमें तो एफर्ट भी नहीं लगता, मैं ही आंसर लिखता हूँ तो भी नाटक. अरे जेन्युइनली मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग सच में डिजर्व करते हैं कि एक दो अटेम्प्ट लगे साला. चल. हम्म. हाँ सही बात है, आप लोग आ रहे हो, आपकी क्या गलती है. दिस करेक्ट. चल. आई लव यू नो वे, आई लव यू टू, बट अब चल भाई, लिखे आंसर. तुम इनफ नहीं, अरे तुम तो जीवन हो पकड़ो मेरा. चल. फर्स्ट क्वेश्चन देखना. वेदर द ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी क्वालिफाइज एज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर. अच्छा, अब सुनो, ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला है, इसमें हल्का फुल्का आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. इसमें ना हम लोग सबसे पहले हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, सेकंड व्हाट इज अ फाइनल ऑर्डर, एंड व्हाट कैन बी चैलेंज्ड अपॉन, मतलब किसके अगेंस्ट अपील हो सकती है, वो अपने को फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करना है. अभी सिर्फ फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड उसके बाद डिस्कस करते हैं. चलो, लिखते देना. फर्स्ट पॉइंट. In the matters under Companies Act 2013, in the matters under Companies Act 2013, comma, NCLT has been given, NCLT has been given, NCLT has been given wide powers, NCLT has been given wide powers to pass an order, to pass an order under operation and mismanagement, under operation and mismanagement. Second, an interlocutory order is an order, an interlocutory order is an order is an order which is passed, which is passed to grant some interim relief
which is passed to grant some interim relief to the applicant, grant some interim relief to the applicant much before the final order is much before the final order is passed. Final order is passed. Next, orders of sorry हाँ ठीक है, orders of NCLT, orders of NCLT can be challenged before NCLT can be challenged before NCLT but not against interlocutory orders, since interlocutory orders, since they're not final in nature, since they are not final in nature. However, continuation में लिख रहे हैं, however, such orders may be appealed upon, such orders may be appealed upon in cases, appealed upon in cases where they substantively या ऐसा लिख लो, where they significantly determines rights of the parties, determines rights of the parties. Full stop. Next point लिखना, since in the present case NCLT passed an interlocutory order, in the present case NCLT passed an interlocutory order restraining the company's board, restraining the company's board from taking any company's board from taking any major financial resolution, major financial resolution without prior approval, without prior approval, comma, it significantly affects the rights of the company, it significantly affects the rights of the company, affects the rights of the company. The rights of the company. And therefore, NCLT may at its discretion, NCLT
may at its discretion हाँ उधर बंद है इसलिए इधर से 10:30 आपका लेक्चर है क्या may at its discretion decide whether to may at its discretion decide whether to admit whether to admit the appeal or not admit the appeal or not डन चलो इसके बाद देखना पार्ट बी द एक्सटेंट ऑफ पावर्स ऑफ रिविजन अंडर रेलेवेंट लॉज एंड वेदर द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन इन दिस केस तो आपका सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि भाई क्या रिवीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इस केस में क्या हाईकोर्ट इंटरवीन कर सकता है तो हाईकोर्ट के पास डेफिनेटली पावर्स हैं इंटरवीन करने के लिए बस आपको टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द हाईकोर्ट ये प्रूव करना पड़ेगा that the lower court or the tribunal has failed to exercise its jurisdiction or they've excessively exercised their jurisdiction बस ये आपको चैलेंज करना पड़ेगा ठीक है देखो यूजुअली फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं यूजुअली द ऑर्डर्स रिव्यू दोस्त हमेशा एनसीएलटी ही करेगी यूजुअली द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी आर अपील्ड बिफोर एनसीएलटी appealed before NCLT. Second, however, the High Court has been given wide discretionary powers. The High Court has been given wide discretionary powers in context of the lower courts or the tribunal, the lower courts or the tribunal where it is proved to the satisfaction where it is proved to the satisfaction of the High Court proved to the satisfaction of the High Court that the lower court that the lower court has that the lower court has failed to exercise its jurisdiction failed to exercise its jurisdiction or excessively exercised the same or excessively exercised the same नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें
Therefore, it could be stated that therefore it could be stated that the High Court may choose to admit this revision petition may choose to admit this revision petition only if it is to their satisfaction only if it is to their satisfaction that the order of the tribunal that the order of the tribunal violates violates fundamental principles of justice fundamental principles of justice. डन दोस्त चलो इसी का पार्ट सी देखें हम जरा illustrate the procedural aspects and stages for filing an appeal before NCLT against the orders of NCLT. I think it's a pretty simple question. वो बेसिक रूल्स आपको लिखाने हैं सबसे पहले कि एप्लीकेशन आपकी जो सॉरी अपील जो आपकी एनसीएलटी के सामने जाती है दैट गोज इन फ्रॉम एनसीएलटी 1 ट्रिप्लिकेट में फाइल करनी है टू दी एनसीएलटी जितनी एडिशनल पार्टीज है इतनी एडिशनल कॉपीज दूसरी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेशन इन इंग्लिश उसके अलावा सिग्नेचर के बारे में लिखना है एफिडेविट के बारे में लिखना है तो बस बेसिक फाइलिंग के जो पॉइंट्स है वो लिखने हैं तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है बट लिख लेते हैं स्टार्ट करें सी का है फर्स्ट पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं एवरी अपील presented before NCLAT shall be in form NCLAT shall be in form NCLAT 1 inform NCLAT 1 submitted in triplicate by the appellant triplicate by the appellant second it must be submitted along with the prescribed fee along with the prescribed fee at the filing counter at the filing counter at the filing counter of NCLAT. Next, certified copy of the order of tribunal. Certified copy of the order of tribunal
must also be attached to the appeal. Attached to the appeal. Next. Additional copies as there are additional number of respondents must also be filed. Must also be filed. Next, the submissions must be signed. The submissions must be signed by the appellant himself, or duly authorized, or their duly authorized representative, or the professional appointed. Next point लिख लें. In case if the documents are not in English, comma, then a translated copy in English. Must also be attached. Done. तो ये आपके 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, है ना. व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इज क्वेश्चन 5. ठीक है. सो पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन था. अच्छा, अब 6 में अगर आप ऐसे देखें तो देयर इज अ चॉइस. 6 और 6 से 2 है. यार दोनों तो मुश्किल है आज पाएंगे. सेटलमेंट वाला है थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली. क्या आई थिंक नेक्स्ट वाला थोड़ा सिंपल है. 6A. अपन लोग पहले 6 ही सॉल्व कर लेते हैं. एक्चुअली केस बेस्ड है. एक बार 6A देखना. आई डोंट थिंक सो ये मेरे को लिखवाने की भी जरूरत पड़ेगी. अच्छा, सिर्फ 6 से एक बार रीड कर लो. डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. इसमें सबसे पहले रिट पिटिशन पूछे हुए आपसे आर्टिकल 32 और 226 का डिफरेंस. ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबुलर फॉर्मेट में आपके नोट्स में दिया हुआ है ना. आई होप ये नहीं लिखवाने की जरूरत है बिकॉज ये डायरेक्टली आंसर है एकदम. सो दोनों रिट्स के बीच में आपको 32 और 226 को डिस्टिंग्विश करना है ना. सेकंड, अगर आप देखें, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एंडोर्समेंट एंड स्क्रूटिनी ऑफ अ पिटिशन, अपील, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट अंडर रूल 28. यार ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे एट दी सबमिशन काउंटर और एट द काउंटर ऑफ द ट्रिब्यूनल एनसीएलटी आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं. रजिस्ट्रार होता है. रजिस्ट्रार सबसे पहले he'll check all the documents and he'll make sure that there are no defects to those documents. If at all there are potential defects which could be removed then and there itself, तो आपको सजेस्ट कर देगा कि वो चेंजेस कर दो. अगर ऐसा है कि डिफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो आपको समय दे देगा 7 दिन का, और 7 दिन के अंदर आपको वापस रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं.
In case if he failed to do that, he has an opportunity to refuse the admission of those documents, right? अगर documents admit नहीं करता है registrar, so in that case आप उसे challenge कर सकते हो before the president of the tribunal. ये लिखना है इसके अंदर, मतलब लिखवा दूंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड, व्हाट आर द एडिशनल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार अंडर रूल 26 ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है आपका, एनसीईआरटी वाले से पूछा हुआ है। हाँ, तो आई थिंक अपन लोग ना पहले 6 लिख लेते हैं, मुझे लगता है बेटर क्वेश्चन है। उसमें अगर एक आध पार्ट आपको ऐसा कोई लग रहा है जो लिखवाने वाला है, मेरे हिसाब से तीनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एनीवे, चलो आप पहले 6 डिस्कस कर लेना। Ravi Mehta, a prominent investor in the Indian securities market, has been accused of violating SEBI regulations. तो बेसिकली ये आपका चैप्टर 13 का क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग सेबी, सैट और उनके पावर्स के बारे में बात करते हैं, राइट? अच्छा, एक बार आप पहले क्वेश्चंस अब इसके चेक करो जरा, है ना? जैसे हम लोगों ने बात की थी, कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर मोटा मोटी आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या फैक्ट्स अपने को यूज करने हैं। फर्स्ट देखें, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशंस 2018 एंड हाउ डू दे अप्लाई टू रवि मेहता केस? इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स। अगर आपने फैक्ट्स ना भी पढ़ो तो ये आप लिख सकते हो, डायरेक्ट है। अब बेसिकली आपको एचपीसी के बारे में लिखना है इसमें, एंड हाउ डू दे अप्लाई टू रवि मेहता केस, इसके लिए अपने को फैक्ट्स लगेंगे। तो बेसिकली आपको फैक्ट्स पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करना है कि सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से केस बैठता है या नहीं बैठता, मतलब कैन दिस केस गो अंडर सेटलमेंट बिफोर सेबी। What is the process for initiating settlement proceedings under SEBI settlement proceedings regulations 2018? तो आपको ये SEBI के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किस तरीके से सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स आगे जाती है। एंड थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय SEBI टू अराइव एट दी सेटलमेंट टर्म्स अंडर, पूरी लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं जब भी वो सेटलमेंट ऑर्डर पास करते हैं, है ना? आई थिंक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। चलो अब एक बार फैक्ट्स पढ़ें साथ में। सो रवि इन्वेस्टर है, उसने सेबी रेगुलेशंस ब्रीच किए। सेबी found that he had indulged in insider trading by accessing UPSI regarding a merger between two listed companies and making profits from the illegal trade. So basically उसने he's caught doing an act of insider trading जहां पर दो कंपनीज का मर्जर हो रहा था और उसमें he made some money. This activity was discovered when SEBI analyzed his trading patterns and found unusual transactions in shares of the two companies just before the merger announcement. तो इन्होंने ये कहा कि सब जो उसके ट्रेड पैटर्न्स थे, तरीके थे, मतलब नॉर्मल ट्रेड करता है, एकदम से कोई बहुत बड़ा ट्रेड किया होगा तो सेबी को लगा कुछ गड़बड़ है। सेबी इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर 11B along with relevant provisions of SEBI PIT. After completing the investigation, SEBI issued a show cause notice to Ravi Mehta alleging that he had violated regulations by trading based on state इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से एंटिटी का बताया हुआ है आपको, इसके स्टॉक्स में उसने कुछ गड़बड़ की है। रवि मेहता, realizing the potential consequences of the charges, including penalties, suspension, and even a ban on trading in the securities market, opts to resolve the matter through settlement proceedings. तो उसको ऐसा लगा कि साहब बहुत लंबे से उलझ जाऊंगा, बेटर है मैं सेटलमेंट में चला जाता हूँ। He expresses his intention to settle the matter without admitting or denying the charges. Yes, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वो इंटेंट दिखा रहा है अपना कि भाई मैं सेटल कर लेता हूँ विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग द चार्जेस, मतलब ना ही मैंने माना है कि मैंने कुछ गलत किया है और ना ही मैं डिनाई कर रहा हूँ कि कुछ गलत किया मैंने, बट इज विलिंग टू पे। अच्छा क्वेश्चन है। बट इज विलिंग टू पे सेटलमेंट अमाउंट एंड अदर टू स्पेसिफिक कंडीशन सेट बाय सेबी। तो पेनल्टी अमाउंट पे करने को तैयार है जो भी सेबी कहती है। कहाँ गया? द सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ सेबी reviews Ravi Mehta's application for settlement under the proceedings, which offers the opportunity for an expedited resolution of matters involving violation of securities law subject to payment of a settlement amount and without any further legal proceedings. तो मतलब ये लॉ आपको परमिट करता है, अलाउ करता है कि सब आप बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के ये मैटर सेटल कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग? तो सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि क्या सेटलमेंट हो सकता है, एंड रवि मेहता वाले केस में सेटलमेंट पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन है।
मैम जा सकता है, ऐसा नहीं है, पीआईडी के केसेस जाते ही हैं। हाँ जी, चलो लिखो। फर्स्ट ए लिख रहे हैं आप, पहले इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें। स्कोप ऑफ सेबी, स्कोप ऑफ सेबी इन ब्रैकेट लिखें, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स ब्रैकेट क्लोज करें, रेगुलेशंस 2018, 2018 is vast, is vast, and therefore, and therefore it also includes, it also includes matters, matters on acts of insider trading, matters of insider trading. फर्स्ट, सेकंड पॉइंट लिखें, subject to, subject to certain matters which are enlisted below, subject to certain matters which are enlisted below, comma, enlisted below, comma, other matters, other matters cannot go in settlement, sorry, other matters can go in settlement, cannot नहीं लिखना, can go in settlement under SEBI Act 1992, SEBI Act 1992, comma, Depositories Act 1996, Depositories Act 1996 और सीकरा 1956 और सीकरा 1956। कोलन लगाना और अब सब पॉइंट लिखेंगे आप। फर्स्ट, ये हम लोग वो पॉइंट्स लिख रहे हैं कि कौन से मैटर्स एडमिट नहीं हो सकते अंडर सेटलमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इन केसेस वेयर, in cases where there is pending inspection, investigation or inquiry, there is pending inspection, investigation or inquiry, second, a prior application on the same subject, a prior application on the same subject was rejected earlier by SEBI, was rejected earlier by SEBI. Next, there is pending recovery of money
there is pending recovery of money pending recovery of money pending recovery money under any securities laws. Next point लिखे. Since in the present case, since in the present case, Ravi Mehta, since in the present case, Ravi Mehta is ready, Ravi Mehta is ready to settle the matter, is ready to settle the matter by paying fine or penalty and admit conditions admit conditions imposed by SEBI imposed by SEBI imposed by SEBI it may go under settlement. It may go under settlement. Done. Second लिखना. अब दूसरे में पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इनिशिएटिंग सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर द सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशंस 18. तो बस आपको शॉर्ट में प्रोसेस एक्सप्लेन करना है. चलो लिखते जाओ फटाफट. पहला, any person desirous of a likely settlement, any person desirous of a likely settlement, likely settlement may submit an application, may submit an application in the prescribed form along with the prescribed fee. Prescribed form along with the prescribed fee. Second, the application received shall be the application received shall be forwarded to forwarded to shall be forwarded to the यार एक मिनट आई थिंक पावर का प्रॉब्लम है. हेलो लाइट ना. हाँ पावर नहीं है. ये इधर चल रहा है एक्चुअली में थर्ड फ्लोर अलग चल रहा है तो पता नहीं कब तक चलेगा. हम्म.
हाँ जी. Shall then be forwarded to the internal committee. Internal committee who shall identify if there is a likely settlement possible and refer the same to same to high powered advisory committee. High powered advisory committee. Next, suggestions of suggestions मत word use करना, recommendations लिखो. Recommendations of HPSC. Recommendations of HPSC shall then be forwarded to HPSC shall then be forwarded to a whole-time member. Then be forwarded to a whole-time member. रेस ही नहीं चला मेरे, पता नहीं क्या हुआ. हाँ, तो ऊपर चल रही है ना क्लास. ये भी चल रही है. नहीं, ये तो बैकअप से है. बाजू में नहीं चल रहा था सुबह, देखा मैंने. हाँ. Forwarded to the whole-time member. 10-15 मिनट. 10 मिनट. Forwarded to whole-time member of SEBI who will pass necessary order. Who will pass necessary order. Next, the amount of penalty levied. The amount of penalty levied must be recovered within 7 days of within 7 days of 7 days में ऑर्डर आता है. मैंने 7 डेज लिखा है ना आपको. एक मिनट. मस्ट बी रिकवर्ड विद इन, ऐसे 30 डेज लिखना. एक्चुअली 7 डेज में ऑर्डर आता है, 30 दिन में रिकवरी. विद इन 30 डेज ऑफ 30 days of the demand notice. 30 days of demand notice. हाँ भाई, चलो इसका एक पार्ट सी और लिख लेते हैं जल्दी से. एंड लेट्स रैप अप दिस. What are the factors to be considered by SEBI to arrive at the settlement terms under SEBI? मतलब SEBI किन किन चीजों का ध्यान रखता है जब भी वो सेटलमेंट ऑर्डर करता है ना. हाँ जी. सर मैं, अरे मैडम तप रहा हूँ साला तुम्हारे रिजल्ट के चक्कर में. पास हो जाना सूरो. देखो भाई, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड by SEBI shall be as follows.
मैम लाइट आ गई। Shall be as follows. First, nature of default. Nature of default. Second, repetitive nature of default. Third, profit earned by. Camera चालू था. Earned by the defaulting party. Defaulting party. Next, loss suffered by the investors. Loss suffered by the investors. Next, impact of alleged defaults. Impact of alleged defaults. Next, willingness of the applicant. Willingness of the applicant to comply with of the applicant to comply with settlement order. Settlement order. और एक आध कुछ लिख लो. Any enforcement action taken against. Any enforcement action taken against the applicant in the past. The applicant in the past. ठीक है. स्टूडियो में ना पावर बैकअप ही खत्म हो गया तो मैं चुपचाप क्लास में आके बैठ गया. वरना साली झगड़ती तो है मेरे से रोज. एनीवे, चलो भाई. तो या 6A का अगर आप रिट वाला क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. एंडोर्समेंट सिक्योरिटी स्क्रूटिनी देखोगे तो डायरेक्ट है. एडिशनल फंक्शंस अगर आपको लगेगा मैं लिखवा दूंगा, ये दोनों लिखवा दूंगा भले. तो मंडे भले लगेगा ये दोनों अगर आपको लिखना है तो ये दोनों लिखवा दूंगा. और पोस्ट दैट विल स्टार्ट विद December 24. ठीक है. चलो, लेक्चर खत्म होते होते दया आ गई तुम पे. मंडे में मिलते हैं. ये तो आने नहीं वाला था दोस्त में. थैंक यू सो मच. सी यू. टेक केयर. बाय.